Guys, we are planning to go out for the dinner. So I'm going dinner with my family because my sister has bought a new car. So I'm not doing any makeup because I'm down right now and I'm not feeling like doing anything. I'm just not even feeling like wearing any accessories. I always wear accessories when I go outside. But right now I'm not feeling anything. So I'm going, let's go. I'm going to apply mascara. This is from Nykaa. I am ready. Let's go now. Breakfast, I'm going to have the poha, and for the tea I'm gonna have fennel seed tea. This is like full of good things, like it has a fennel seeds and some honey and warm water. Let's try poha. Let's get ready with me for birthday shopping. So I'm gonna apply hyaluronic acid first because to hydrate my skin, because ये स्किन को हाइड्रेट कर देता है. I usually don't go nicely when I go to market, like मैं makeup नहीं करती because I wanted to feel comfortable, but I think I should look presentable today. इसके बाद I'm gonna apply sunscreen. It's very important to look nice, presentable. If you will feel nice, if you will look nice, you will feel nice and you will feel confident in yourself. I'm just literally praying कि weather अच्छा रहे because गर्मी ना हो जाए. It's right now, it's 10 o'clock and मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी. मेरे को इज़ लाइक एक्सप्लोर भी करना है मार्केट, बट मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करती है. लाइक मेरे को और जो मुझे लगता है कि जो मेरी नेसेसिटीज़ है, लाइक नेसेसिटीज़ एंड वॉन्ट्स है, मैं लिख लेती हूँ एक जगह एंड मैं वही बाय करके ले आती हूँ. बस उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा फालतू बाय नहीं करती बिकॉज मुझे लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है. So I'm gonna apply concealer, some compact, gonna apply a little bit of blush. Guys, I'm ready to go. मैंने ये ब्यूटीफुल सा नेकलेस पहना है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड आई एम गोइंग राइट नाउ. अभी मेरे बाल बहुत ख़राब लग रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली गीले हैं, जब सूख जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. This is my outfit. This is like basically Indian outfit. Let me show you. This is how I'm looking. थोड़ा सा नीचे करती हूँ. So I'm wearing jeans and top. So yeah, bye. So hi guys, I'm finally back from the market and I have shopped so much, like anything. Like I have got, I guess 20 dresses, not 20 dresses, like overall 20 clothes, 20 pair of clothes, 20 piece of clothes, I don't know. And I am feeling so tired right now, but I have to make my, like I have to keep all the clothes in place because I have to shoot so many videos, I have to work for my brand, so I need to do so many things. I have got this beautiful bottle from the market. Like मेरे पास ऐसे 3 बॉटल है 3 कलर की, जो कि खो गई है, मतलब पुरानी हो गई है. So I got again पिंक कलर में, बस ब्लैक है, ग्रे है. And this is like very cute aesthetic. It has some stickers which I have pasted. Yeah, online में मिल जाएगी आपको आराम से. Then this is like a 3 bottle. आपको like I'm going to take this bottle in for the gym. This one मैं gym लेके जाया करूँगी, ये वाली bottle. ये वाली bottle मैं घर में पानी पिया करूँगी, gym लेके जाया करूँगी. And this is so cute bottle. Let me show you. See how pretty it is. It is like totally. It is giving me a very girlish vibe. Very nice bottle. These bottles are look very aesthetic, very nice. So I'm just gonna clean. I just love this bottle so much. I need to fill the water also. I am like a bottle person. I love so many cute bottles. Like cute bottles, more water. I got that bottle from Miniso, and I have got another cute thing. This lip gloss. Let me show you how this is. Like
this lip gloss. It's so cute. So guys, I have, so please ignore my night suit. It is looking very kiddish wala night suit, but this is so comfortable. Like cotton clothes are so good at home. So I'm gonna take out all my denims. This is basically my drawer where I kept my clothes. I literally don't like to put like पूयल मीरा भर दूँ. I'm not like मुझे पूरा wardrobe चाहिए. I just keep my clothes here. Like this is just like my, like when I'm going somewhere I keep my clothes here. Like it is very easy. मैं जल्दी से clothes निकालूँ पहनूँ, and बाकी के like घर के जो कपड़े होते हैं वो मैं बाहर वाली अलमीरा में रखती हूँ. So this is not even almirah. This is basically a drawer where I keep my clothes. But it is very nice. So yeah, we are gonna take out all the denims first because my clothes are looking very bad. So I'm gonna take out all the clothes first, then मैं सब fold करूँगी and then I'm gonna keep it back. I have realized I have so good clothes, guys. Like, but what I wear, this is very comfort cotton clothes, छोटी सी shorts. This is comfortable. I don't know, but I have so many good clothes जो कि मैंने खरीदे, मैंने आज तक नहीं पहने हैं. And literally मैंने इसे like this denim skirt मैंने अभी तक नहीं पहना है. Literally it took more than 1 hour. Look at the clothes I need to do laundry. Let me show you my nails. See, it is so pretty. Like it is something unique. I don't want it to be very aesthetic, like a nude color. I just want to look like something new and different. So I got grey and pink because right now I'm loving the Barbie theme. Guys, I have kept my clothes very nicely. This is gonna be like my drawer जो कि मैं when I go outside तो मैं ये सारे कपड़े पहनूंगी. Then lower drawer में let me show you what I kept. This is like basically a party clothes. Now I'm hungry but I have to clean this. I have done my laundry. मैंने कपड़े बाहर सुखा दिए हैं जो कि बहुत बुरे लग रहे हैं, but I'm done. I'm gonna make the pineapple toast. This jam is from London. My mama got it from London and this is so good. Like I just toast the bread and I apply this jam. This is so good. Like full of pineapples and very nice jam. I love this. Now I'm making pineapple toast along with my green tea. My water is boiled. My snack plate is ready. It's a pineapple jam. It's a healthy jam because इसमें sugar content थोड़ा सा कम था compared to थोड़ा Indian jams जो होते हैं. And bread है, हल्के से chips है, कोई खा रहा था so I thought मैं भी ले लेती हूँ. And my oh god कितने messages आ रहे हैं. So मैंने सोचा कि मैं green tea भी पी लेती हूँ because अरे चुप हो जा. Oh my god, green tea is my love forever. Green tea with this big basket royal honey. So good. It is like I'm gonna have these fruits right now. So मैंने आरती कर ली है. I'm gonna clean my mirror. बहुत ज़्यादा dirty हो रहा है. Guys, hi. Right now basically it's 10 o'clock. Right now 11 o'clock हो रहा है. And अभी भी मेरा work complete नहीं हुआ. I'm just cleaning my brushes. बहुत ज़्यादा dirty हो गए हैं. And मेरा like कल मेकअप बुकिंग है तो मुझे उसके लिए रेडी रखना है. अब सब कुछ क्लीन करना है. बहुत ज़्यादा dirty हो रहे brushes. Even मैं content भी shoot नहीं कर पा रही हूँ. So I'm just gonna clean it. Today is like going very productive day. Yet मैंने अपने brand के लिए काम नहीं करा है, but it is going to be like a reset vlog. Things which are like very important, we cannot miss. Like I'm doing those things today. And literally मैंने पूरा room clean कर लिया, अपना सब कुछ clean कर लिया. Now I can literally get back to work nicely because everything is reset now. So basically this is my last thing I'm doing. I will be free after this finally. गाइस फाइनली रात हो गई है एंड टाइम 12 o'clock होने वाला है. इट वॉज सो हैक्टिक डे. मैं इतना ज़्यादा थक गई बिकॉज आज मैंने बहुत सारा काम करा है. लाइक मैं मार्केट गई, फिर मुझे बहुत सारा लाइक एडिटिंग का काम था, सारी क्लीनिंग करनी थी, सब
वॉश करना था, सारा सब कुछ क्लीन करना था. सो इट वॉज अ वेरी प्रोडक्टिव डे बिकॉज अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं करती तो मुझे बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है दिमाग में एंड आई डोंट फील प्रोडक्टिव. ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा. सो राइट नाउ आई एम गोना डू स्किन केयर. सो आई एम गोना शेयर माई नाइट स्किन केयर विद यू. Look at my nails. I just love gel nail pins and they're looking so pretty, very pretty. So first I'm gonna apply this hyaluronic face serum. ये बहुत अच्छा है फेस के लिए. वाव का है ये. बहुत ही अच्छे से स्किन को ना हाइड्रेट कर देता है एंड मॉइस्चराइज रखता है. सो मैं इसे डेली तो अप्लाई करती हूँ. ये मेरा खो गया था एक्चुअली 2 दिन से, मुझे मिल नहीं रहा था एंड अभी क्लीनिंग करते करते मेरा सारा सामान मुझे मिल गया जो खो रखा था इतने टाइम से. सो एज यू कैन सी लगाते ही मेरी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो गई. वैसे ही बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी. इसके बाद आई एम गोना अप्लाई दिस कोरियन फेस सीरम. दिस इज़ अ राइस वाटर सीरम. मेरा फिनिश होने वाला है. वो फिनिश हो चुका है, ये ऑलमोस्ट फिनिश ही हो चुका है. सो आई कैन नॉट अप्लाई. आई नीड टू रीपर्चेज दिस. इसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ कॉर्जिक एसिड होता है, कॉर्जिक एसिड मॉइस्चराइज़र. क्योंकि मेरी टैनिंग कभी कभी हो जाती है, मैं बाहर जाती हूँ तो स्किन को हाइड्रेट करता है एंड मॉइस्चराइज भी करता है. मैंने बिंदी लगाई है क्योंकि मुझे बिंदी मिली क्लीनिंग करते करते. एंड एज यू कैन सी स्किन कितनी ग्लोई हो गई है मॉइस्चराइज़र को लगाते लगाते. नॉन स्पॉन्सर्ड है, पहले ही बता दूँ. एंड लास्ट में मैं बस एक स्टेप और करती हूँ. मेरा ना मुझे अब फील हो रहा है मुझे अपना स्किन केयर भी क्लीन कर लेना चाहिए था बिकॉज इट इज़ लुकिंग लिटिल बिट डर्टी. फिर मैं अप्लाई करती हूँ ये वाला मॉइस्चराइज़र. दिस इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र. दिस इज़ फ्रॉम लॉर्ड कोरियन ग्लास स्किन राइस वाटर मॉइस्चराइज़र. बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है. सो या मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है आजकल. आई डोंट नो व्हाई. मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है. दैट्स व्हाई ग्लो नहीं करी. अभी तो ग्लो कर रही है बिकॉज मैंने इतनी क्रीम लगाई है तो ग्लो तो करेगी ना, वैसा कर. सो एज यू कैन सी माई स्किन इज लुकिंग वेरी नाइस, वेरी ग्लोई. आई जस्ट लव दिस मॉइस्चराइज़र. एंड आज मैंने एवर यूथ का स्क्रब यूज़ करा था जिसके कारण मेरे फेस थोड़ा क्लीन लग रहा है. नाउ आई एम जस्ट गोना डू लिटिल बिट ऑफ दिस फेस मसाज क्योंकि मुझे लग रहा है मैं हल्का हल्का. जस्ट अ सेकेंड. सो आई एम गोना डू लिटिल बिट ऑफ फेस मसाज. दिस इज़ अ स्टील वाला ना गौशा, तो इससे क्या होता है ये टूटता नहीं है. मेरे जितने भी स्टोन वाले गौशा है वो टूट जाते हैं. सो आई एम गोना डू लिटिल बिट ऑफ मसाज. एंड मैं बहुत टाइम से जिम नहीं गई हूँ बिकॉज मुझे डाउन थी. तो आजकल मैं जिम भी जाना स्टार्ट करूँगी. एंड या सी कितनी अच्छी सी स्किन हाइड्रेट हो गई है एंड सॉफ्ट लग रही है. इसमें आई एम गोना अप्लाई दिस लिप गार्ड फ्रॉम जॉय. Like I'm not interested in applying lip balms and all thing, but ये रहता है तो मैं अप्लाई कर लेती हूँ. and this is just like a normal lip balm. yeah, I'm done. Finally I'm done. I can sleep now. This is for the video. कैसी लगी वीडियो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. दिस इज़ जस्ट रैंडम व्लॉग, अ प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ काइंड ऑफ. जनरली मैं दूसरी वीडियोस लेके आऊँगी. आपको कैसी वीडियोस देखना पसंद है लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय गाइस. लुक एट माई कलर ब्राउन. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट. आज मैं बहुत थक गई हूँ.